हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 10 की बात करेंगे, जिसमें फर्दर टॉप 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में या एनी सॉर्ट ऑफ जॉब इंटरव्यू या यूनिवर्सिटी टेस्ट में हेल्प आउट करेंगे। सो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए, इसको लाइक करें, अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें और हमारे चैनल CivTech सिंप्लीफाइड का हिस्सा बने, इसको सब्सक्राइब करें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहां पे प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर आपके साथ डिस्कशन की जाएगी इन क्वेश्चंस के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 161 सेज दैट द रिवेट्स आर यूज्ड फॉर डैश फास्टनिंग। ऑप्शन ए परमानेंट फास्टनिंग और ऑप्शन बी टेम्परेरी फास्टनिंग। सो रिवेट्स जो है वो परमानेंट फास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। सो ए हियर इज द करेक्ट आंसर फॉर question number 161. Question number 162. When one plate overlaps the other and the two plates are riveted together with two rows of rivets, the joint is known as option A single riveted lap joint, double riveted lap joint, C double riveted single cover butt joint, D double riveted double cover butt joint. So इसमें देखिए कि एक प्लेट है दूसरी प्लेट के ऊपर रखती हैं और उसको रिवेट करना है दो रोज ऑफ रिवेट्स के साथ. सो इट्स अ डबल रिवेटेड लैप जॉइंट. सो टू प्लेट्स हैं और उसको दो रोज ऑफ रिवेट्स के साथ फास्टन किया गया है. Therefore, B here is the correct answer for this question. Double riveted lap joint. When two main plates are kept in alignment, butting each other and riveted with cover plate on both sides of the main plate, with two rows of rivets in each main plate, the joint is known as dash double cover butt joint. अब इसमें देखें कि when two main plates are kept in alignment, butting each other and riveted with cover plate on both sides of the main plate with two rows. अब यहाँ पे भी two rows of rivets हैं for each main plate. So इधर joint जो है वो double riveted double cover butt joint कहलाएगा, क्योंकि इसमें butting भी हो रही है और riveting भी हो रही है. So B here is the correct answer for this question. Then we have question number 164. In a riveted joint, when the rivets in various rows are opposite to each other, the joint is said to be option A chain riveted, option B zigzag riveted, option C diamond riveted, option D none of these. When in a riveted joint, when the rivets in various rows are opposite to each other, the joint is said to be chain joint. So A here is the correct answer. 165. In a riveted joint, when the rivets in the adjacent rows are staggered in such a way that every rivet is the middle point of two rivets of opposite rows, the joint is said to be diamond riveted. Option A is yes, option B is no. So no here is the correct answer for this question. 166. In a riveted joint, when the number of rivets decreases from innermost row to outermost row, the joint is said to be option A chain riveted, option B zigzag riveted, option C diamond riveted, option D none of these. Riveted joint में जब number of rivets decrease हो रहे हैं from inner to outer, so ऐसे joint को कहा जाता है diamond riveted. So C here is the correct answer for this question. 167. The center to center distance between two consecutive rivets in a row is called option A margin, option B pitch, option C back pitch, option D diagonal pitch. Center to center distance दो rivets का एक रो के अंदर कहलाता है pitch. B here is the correct answer. Distance between the center of a rivet hole to the nearest edge of the plate is called option A is margin, B is pitch, C is back pitch, D is diagonal pitch. So वो distance जो आपके rivet से लेकर plate के edge तक होता है उसको कहा जाता है margin, और रिवेट टू रिवेट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कहलाता है पिच. So margin here is the correct answer, which is option A. 169. The distance between the center of rivets in adjacent rows of zigzag riveted joint is called back pitch. Option A true, option B is false. So B here is the correct answer, false. 170. The perpendicular distance between center line of successive rows is called pitch. Option A agree, option B is disagree. The perpendicular distance between the center line of successive rows
is called pitch that is not correct. So B here is the correct answer, which is disagree. So friends, ये था हमारा part 10 of our ongoing video series on strength of material multiple choice questions. I hope आपने इन questions को learn किया होगा। इन videos को मुकम्मल देखिए, इनको like करें, share करें और CivTech Simplified को subscribe करें। So next video में हम next part के साथ दोबारा हाजिर होंगे। So तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। Thank you very much and have a good day.